Hello everyone, welcome to the channel. My name is Divya and today we are doing this very important and also very interesting topic, that is महाजनपदास. तो इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि महाजनपदास क्या थे और जो इम्पोर्टेंट 16 महाजनपदास थे वो उनका क्या इम्पोर्टेंस था, और we will be also doing socio-economic conditions during महाजनपदास, then religious conditions during महाजनपदास. ठीक है, तो हम उतना डिटेल में हर एक चीज़ पे नहीं जाएंगे, बट इतना हम करेंगे कि हमें एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए. And this video will be bilingual. It means that I will deliver my content in English as well as in Hindi. So let's start. So Mahajanpadas basically means great realm. Okay. So Maha means great and Janapada means foothold of people. Okay. हिंदी में समझे तो महाजनपद जो थे वो प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था. ठीक है. So if we talk about that, how they emerged, right? So in the later Vedic period, we know that there were tribal organizations, right? So now these tribal organizations changed its identity and gradually shifted to the territorial identity. And the area of settlement were now regarded as Janapadas or states, right? So in transition from tribe to monarchy, they lost the essential democratic pattern of the tribe, but retained the idea of government through an assembly representing the tribes. देखिए, हम जानते हैं कि जो लेटर वैदिक पीरियड था, मतलब जो उत्तर वैदिक काल था, वहाँ पे कोई ऐसा राज्य नहीं था बहुत बड़ा कि एम्पायर है या बहुत ही मोनार्किकल सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं था. ट्राइब्स थे, और हम जहाँ तक ट्राइब के बारे में हमारी जो नॉलेज है, हमें पता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा होता है. बिकॉज जो कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो ट्राइब्स में होता है, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट जो कि स्टेट से है ना. तो ये जो ट्रांजिशन हुआ ट्राइब्स से मोनार्किकल मोनार्की सिस्टम में, तो ये जो था ये एक बहुत बड़ा बदलाव था. Now these states consisted of either a single tribe such as the Shakyas, Kolyas, Mallas, etc. Okay, so these are the name of tribes, okay, etc. Or a confederacy of tribes such as the Vrijis, Yadavas, Panchala, etc. Now the people in the lower Ganga Valley delta, which were outside the Aryan Pale, were regarded as Malechas. ठीक है, तो मतलब जो लोग आर्यन नहीं थे और जो कि उनसे अलग थे, उनको मलेच्छास कहा जाता है. वैसे देखिए, मलेच्छ जो शब्द है वो आपको पता अगर हो तो उस टाइम में जो अरब लोग होते थे ना, मुस्लिम्स, उनके लिए भी यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे उन हर लोगों के लिए मलेच्छास यूज़ किया जा रहा है जो कि आर्यन नहीं थे. ठीक है. So there was therefore a strong consciousness of the pure land of Aryans called Aryavarta. Okay, so each Janapada tried to dominate and subjugate other Janapadas to become Mahajanpadas. There are various sources जो कि हमको महाजनपदास के बारे में बताते हैं. जैसे मतलब उत्तर वैदिक काल में काफ़ी सारे जनपदों का उल्लेख हमको मिलता है. जैसे बौद्ध ग्रंथों में तो इसका कई बार उल्लेख मिला है. उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अंगुत्तर निकाया. ठीक है, जहाँ पे हमको 16 महाजनपदास के बारे में मिलता है इन द 6th century BC, और उनके कैपिटल्स, उनके लोकेशंस, इन सब की भी जो है वो वहाँ पे मेंशन किया गया है. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट अदर सोर्सेज लाइक जैन सोर्सेज, भागवती सूत्र, दैट इज ऑल्सो वेरी important. So if we talk about important Mahajanpadas, then the kings in these states had the supreme authority. Kings का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि मोनार्की जब आ जाती है तो किंग जो होता है वो सबसे सुप्रीम हो जाता है, राइट. वही ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जो पावर होती है वो इंसान के पास नहीं होती है. ठीक है, यही देखिए, ये फ़र्क जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड ट्राइबल सिस्टम. ये फ़र्क होता है कि जब मोनार्की, जब एक किंग आ जाता है ना,
ठीक है, तो वो इंसान जो होता है वो सुप्रीम होता है। लेकिन ट्राइब में ऐसा कुछ नहीं होता, ट्राइब में हर एक बंदा सुप्रीम हो सकता है। एंड वन थिंग इज दैट नॉट ऑल महाजनपदास or janpadas were monarchical. Okay, some of them were also republics. So what were republics? So these republics refer to government in which supreme power resides in a body of citizens, okay, entitled to vote, and is exercised by elected officers and representative responsible to them and governing according to the law. Okay, so as I said that these Mahajanapadas were either monarchical or republican in character, right? Now the monarchies were generally concentrated in the Gangaric plains, right? And the republics, they were ranged around the northern periphery of these kingdoms in the foothills of the Himalayas or to the south of these in northwestern India, that is in modern day Punjab. Okay, so out of the 16, we all know that we have 16 Mahajanpadas. Okay, so these 16 Mahajanpadas we will discuss in detail. Okay, now the Vajjis, Mallas and Saka, they were republics. Okay, these three were republics, whereas other were monarchies. If we talk about the conditions, that led to the rise of these Mahajanpadas, ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्यों, आखिरकार क्या बैकग्राउंड था इनके फॉर्मेशन का, तो देखिए the increase in use of iron, okay, in eastern Uttar Pradesh and western Bihar, right? तो अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हमारी वीडियोस में से एक है जैना पे, तो जहाँ पे जो ये डिफरेंट सेक्ट्स हमने बात करी थी, जैसे जैना हो गया या बुद्धिस्ट हो गया, हमने उसके बैकग्राउंड की भी बात करी थी कि जो आयरन था उसका बहुत बड़ा यूज़ था। ठीक है, तो वो भी जो था वो उस बैकग्राउंड में काफ़ी उसका भी इम्पोर्टेंस था, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो जो इंक्रीज इन यूज ऑफ आयरन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार, इट क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ large territorial states, because the new agricultural tools, right, and implements enable the peasant to produce far more food grains than they required for consumption, है ना। सरप्लस आप बनाने लगते हैं, तो आपने तो पढ़ा ही होगा, कार्ल मार्क्स ने भी इसके बारे में बात करी है। And the extra production can be used to meet their military and administrative needs. And also urbanization in this phase also fostered the idea of territorial expansion. Okay, so as I have said that the Mahajanpadas of Vriji, Malla, Kuru, Panchala and Kamboj, they were republican states, and there were other smaller states also like Lichichvi, Shakya, Kolya, Bhaga and Maurya. Now these republican states, they had Gana Parishad, which were basically assembly of senior and responsible citizens. Now this Gana Parishad had the supreme authority in the state. Okay, they were very powerful, so all the administrative decisions were taken by this Parishad. Now again, the republics, they were basically of two types. दो तरह के होते थे republics. पहले कि जो the republics comprising a single tribe, like those of the Shakyas, the Kolyas and the Malla, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. And then secondly जो है वो है the republic comprising a number of tribes or the republics of confederacy like the Vrijis, जो confederacies में होते थे. अब देखिए, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एग्ज़ाम्स में मोस्टली जो है वो ये 16 महाजनपदास के नाम पूछ लेते हैं, या फिर उनका कैपिटल पूछ लेते हैं, या उनकी लोकेशंस पूछ लेते हैं, या फिर जो राजा जो है मतलब कौन सा किंग जो है वो कौन से महाजनपदास में जो था वो रूलर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, जैसे कि नेट हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि इनका रूलर कौन था। ठीक है, तो हम उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कि ये 16 महाजनपदास कौन कौन से थे। ओके ओके, so the first Mahajanpadas that I will be talking about is Gandhara, whose capital was Takshila. Okay, and if we talk about the location, then it is basically covering the region between Kabul, which is in Afghanistan, and Rawalpindi, I think, which is in Pakistan, I guess. Okay, so in northwestern province. The ruler was Naganjit. Gandhara, it was a very important place, and Aitariya Brahman refers to King Naganjit of Gandhara as a contemporary of Raja Janaka of Videha. Second one is Kamboja, which is covering the area around the Panch area in Kashmir, and its capital was Rajpur.
And Cambodia appears to one of the early Vedic tribe. Okay, they are referred to in Yasaka's Nirukta like Gandhara. The Cambodia country is included in the Uttarapatha or northwest India. And also Ashoka's edict refers to Cambodia along with Yona as Pace, Antima Janapada or Frontiers province. Okay. And also, the Kambodjas occupied roughly the province Rajouri or ancient Rajpura, including the Hazara district of the northwestern frontier province, as I have said. The horses of Kambodjas, they were very famous throughout all periods of Indian history. Then the third one is Asmaka, whose capital was Portana. Okay, it was covering modern Paitan in Maharashtra on the bank of river Godavari. So, Asmaka was also called Asaka. Okay. सो कंफ्यूज मत होना, या असाका होगा या अस्माका होगा, ठीक है. तो कैपिटल जैसे मैंने बताया कि पोतना है इसका, ठीक है. और द अस्माकास आर ऑल्सो मेंशन बाय पाणिनि. ओके, सो ये भी ध्यान रखना. एंड प्लेस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है. इसके राजा, इसका कौन राजा था और इस पर कौन राज करता था ये मुझे नहीं मालूम है. अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. द फोर्थ वन इज वत्सा, whose capital was Koshambi, and it was covering the modern district of Allahabad and Mirzapur. Now, Vatsa was, very important, and it was a monarchical, and it has a monarchical form of government, and it was ruled by Udayana. In the 6th century BC, they had to struggle against King Ajatashatru of Magadha and also King Pradyota of Avanti. So Udayana entered into also, matrimonial alliance with the king of Magadha. The ruler of Avanti invaded Koshambi and he was quite unsuccessful. So he had to marry his daughter to Udayana. To begin with, also Udayana was opposed to Buddhism. He was also, he never liked Buddhism, but later on he became a follower of Buddha. So, and also he made Buddhism state religion. So now if we talk about the other one, Avanti, whose capital was Ujjain, which was covering modern Malwa region of Madhya Pradesh. Chanda Pradyuta was the ruler of Avanti, and he was also known by this name Chanda. Okay, and he was a very ferocious ruler who was later converted into Buddhism. So Avanti, we all know that Avanti became a very important center of Buddhism. The kingdom of Avanti was later annexed by Magadhan Empire by Shishunagara. Okay. Next we have Surasena, whose capital was Mathura, which is located in the Mathura region at the junction of the Uttarpath and Dakshinpath. Surasena was also a very important Mahajanpath. Then we have Chedi, whose capital was Suktimati, which was basically covering the modern Bundelkhand area. Country of the Chedis lay near the Yamuna, which was very near to Kurus. Now we have Mallas, whose capital was Kushinara, which was, Pava. Okay. And Malla was named after the ruling clan of the same name. So the Mahabharata mentioned the territory as the Maharashtra. That is Malla state. The Mallas, they are frequently mentioned in Buddhist and Jaina works. So they were a powerful clan of eastern India. Okay. And it is said that Pandu Putra Bhimsen is said to have conquered the chief of the Mallas in course of his expedition through eastern India. Okay, so Mahabharata mentioned Mallas along with Angas, Vangas and Kalingas as eastern tribe. So हाँ, जब मैंने बात करी थी ना ट्राइब important source की महाजनपदास के लिए, तो ये बात याद रखिएगा कि जो महाभारत है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है महाजनपदास के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे 9th Mahajanpada जो है Kurus, whose capital was Hastinapur and Indraprastha, which is covering the modern Haryana and Delhi area to the west of the river Yamuna. तो ये भी जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और महाभारत में तो पता है कि इसका काफ़ी हमको जो है वो मेंशन मिलता ही है कुरुस का. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो पुरानाज दे ऑल्सो traces the origin of Kurus from the Puru Bharat family. And Atriya Brahmana also locates the Kurus in Madhya Desha and also refers to the Uttara Kurus as living beyond the Himalayas. So according to Buddhist texts, people of Kurushetras, they came from the Uttara Kuru. Then we have Vayu Purana also attests the Kuru, son of Samvarsana of the Puru linkage, was the ancestor of the Kurus and the founder of the Kuru Shastra in Kurukshetra. The country of the Kurus roughly correspond to the modern Thaneshwar Union Territory of Delhi and Meerut, as I have said.
And the Kurus, they also had matrimonial relations with the Yadavas and the Bhojas and Panchala. देखिए उस टाइम में भी आपको पता है कि मैट्रिमोनियल जो रिलेशंस थे उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता था. मतलब हमने जितने भी डायनेस्टीज पढ़ी हैं उन सब में हम देखते हैं कि ये अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए भी बहुत ही लोग मतलब राजा इन्हें यूज़ करते थे इस चीज़ को. ठीक है कि शादी कर लो मतलब दूसरे जगह पे, तो उनसे उनके रिश्ते अच्छे हो जाते थे. या फिर अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो उनकी बहन बेटियों से शादी कर लेते थे. तो हमारा जो 10th है वो है हमारा मत्स्य, जिसका की कैपिटल जो था वो विराट नगरी था, which is covering the area of Alwar, Bharatpur and Jaipur in Rajasthan. Matsya, they appear to have been one of the prominent tribe that made up the Vedic Aryan 180 people in the earliest period of their residence in India. ठीक है. So Ahim in the Rig Veda refers to the Matsyas who were attacked by Durvasa, a famous king. Now the 11th Mahajanpada was Vajjis, okay, whose capital was Vaishali and which was located to the north of the river Ganga in Bihar. देखिए आप अगर एक चीज़ ध्यान से सुन रहे होंगे अगर आप, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितने मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली जो महाजनपदास हैं वो अलोंग रिवर गंगा के हैं बने. ठीक है. तो जो लोअर गंगा है मोस्टली उसके ही अराउंड डॉटेड है. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बार इवन 12th वगैरह में भी शायद आपको मार्क करने के लिए आ जाता है कि बताइए कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा है, या फिर पूछ लिया जाता है. तो लोकेशन जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम वज्जी की बात कर रहे थे ना, तो वज्जी टेरिटरी जो मैंने बता दिया कि ये कहाँ पर है. ये है लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार. ओके. नाउ द वज्जी स्टेट इज सेड टू हैव बीन अ कन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस, ओके, जिसे हम कहते हैं अस्तकुला, of whom the Videhas, the Lichavis, the Janatrikas and the Vajjis were the most important, most prominent. उसके बाद हमारा क्या है, अंगा है, whose capital was Champa, which is basically covering the modern district of Munger and Bhagalpur in Bihar. Then we have Kashi, whose capital was Banaras, which is located in around present day Varanasi in Uttar Pradesh. Then we have Koshala, whose capital was Shravasti, which was covering the present district of Faizabad, Gonda, Bharuch, etc. Okay, now we have Magadha. Now Magadha was very important. Okay, Magadha was the most important Mahajanpada, okay, whose capital was Giriraj or Rajgriha, which was covering modern district of Patna, Gaya and parts of Shahabad. Now the capital city Patliputra was situated on the confluence of major river like Ganga, Son and Punpun and Gandak. Okay, so the alluvial plain of this region and its proximity to the copper and iron-rich areas of Bihar and Jharkhand helped the kingdom to develop good quality weapons and support the agrarian economy also. Okay, so its location at the center of highway of trade of those days contributed to its wealth. Okay, so all these factors helped Magadha to emerge as most prosperous state of that period. Now there are other names also which are given to this Mahajanpada like Magadhapura, Vrihadratpura, Vasumati, Kushagrapura and Bimbisarapuri. Okay, and also remember that it was an active center of Jainism in ancient times, right? And the first Buddhist council was held in Rajgriha. Don't forget, अब पुराने जो लेक्चर्स वो भी देखा, लेक्चर नहीं मतलब जो भी हमने कंटेंट डिलीवर किया वो आप देखा करिए. तो रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक आपको रिलेट करना आना चाहिए. जो आप आज सुन रहे हैं आपने पिछली बार क्या सुना तो वो आपको रिलेट होना चाहिए. तो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता है वॉज हेल्ड इन राजगृह नियर द वल्चर हिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड सप्तपर्णी गुहा. ठीक है. सो लेटर ऑन पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल ऑफ मगध. अब हमारा जो लास्ट है वो है हमारा पंचाला, हुज कैपिटल वॉज अचिछत्रा वेस्ट पंचाला एंड कंपलिया साउथ पंचाला, विच इज which is present day Rohilakhand and part of central Doab in उत्तर प्रदेश. So ये हमारे जो थे वो 16 महाजनपदास थे. और ये देखिए अगर पंचाला जो है वो उसकी हम बात करें तो इट वॉज मोनार्किकल क्लैन. ठीक है. इट वॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी. एंड मतलब पंचालाज दे हैव स्विच टू रिपब्लिकन कॉर्पोरेशन इन द 6th and 5th century BC. 4th century BC, Kautilya's Arthashastra also attached to the Panchalas of following the. It was basically a king council and constitution था. तो ये बहुत ही important था. बस ये याद रखना है. और पंचाला को जो था had been the second urban center of Vedic civilization. ठीक है.
ये भी चीज़ याद रखनी है। और जैसे कि तैतरिया वैदिक स्कूल्स, दे वर ऑल्सो लोकेटेड इन द एरिया ऑफ पंचाला। एंड इन द इंडियन हिंदू एपिक महाभारत, द्रौपदी जो कि वाइफ थी पांडवास की, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ पांचाला महाजनपदास के समय में, ठीक है। व्हाट वाज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग महाजनपदास? नाउ बिसाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग एम्पायर्स, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर of the age was increased prosperity and the growth of towns, ठीक है। ये तो मैंने इतना आपको बताया पिछले, तो आपको समझ में आया होगा। Now the primary reason of increased prosperity of India was its growth of foreign trade with the countries of the northwest, western countries and several countries of Asia। अगर आपको नॉलेज होगी हिस्ट्री की थोड़ी सी भी, तो आपको पता है कि हड़प्पन टाइम से ही हमारा जो है वो ट्रेड लिंक रहा है दूसरे जगहों से, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, रोमन जो है उनसे भी था, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया से भी था, और अरब से तो था ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। नाउ देयर वर ऑल्सो सेवरल ट्रेड रूट्स एंड रोड्स कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन ऑल डायरेक्शंस। One trade route was from Koshambi through Gangetic Plains to Punjab, and then Takshila joining the routes to Iran, Central Asia. Now European countries and several countries of Asia से भी जो है वो हमारा जुड़ा हुआ था। Another route started from Rajagriha and passing through Koshambi and Ujjaini was connected with the port of Baroch. Baroch बहुत important port था, ठीक है, from where the trade was carried on with western countries through sea route. Now one important route passed through the entire Gangetic Plain and reached the boundary of Burma, and yet another route connected northern plain with the sea coast of southeast. So these routes developed because of the increased trade and in turn helped in enhancing internals as well as external trade. अब इतने सारे ट्रेड रूट अगर हमको मिले हैं, बनाए गए हैं, तो क्यों बनाए गए हैं? अगर इसकी ज़रूरत ही ना होती तो बनाए ही नहीं जाते, है ना। अगर हमको इतने सारे ट्रेड रूट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रेड था वो इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा था, ठीक है। नाउ द इंक्रीज्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडियंस अफेक्टेड देयर सोशल स्ट्रक्चर एज वेल, and the towns become not only the centers of trade but centers of industries as well. Various goods were produced on a large scale to feed the foreign trade, and that could be possible only in towns or vice versa. Towns grew up where goods were produced on a large scale. So by that time Indian rulers had started minting good coins of different metals. It helped in the development of trade and growth of industries because coins proved to be a good medium of exchange and thus facilitated transactions. So the growth of trade and industry formed rich trading and industrial communities which concentrated themselves in towns. So we find existence of different guilds formed by traders and industrialists during this period. It created various organized and consciously awakened groups in towns which finally resulted in the formation of several subcastes. देखिए मैं अगर आपको समझाऊं तो जो मैंने हिंदी में बनाया ना जैन, आप उसको एक बार देखना, उसमें काफ़ी कुछ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मेंशन किया गया है, और खासकर जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ उससे भी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर हम रिलीजियस कंडीशंस देखें महाजनपदास की, तो द चेंज इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉन्टेम्प्रेरी रिलीजियस थॉट। ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, वो तो उस पर तो असर आएगा ही आएगा। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द अवेकन ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लेबर रिजल्टेड इन पुटिंग अ चैलेंज इन द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मणास। अब आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बताना कि जो ट्रेडर्स थे वो कौन सा रिलीजन ज़्यादा चूज कर रहे थे, कौन, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द सबकास्ट ऑल्सो did the same. Several of these groups were rich as well, which give them an advantageous position in the society. So it also led to religious awakening in the society, which resulted in formation of several religious sects. So there is no doubt that the rise of Jainism and Buddhism during this age was a result of the changed economic and social circumstances also. So and we also find that both of these religious sects got support from the neo-rich trading and industrial classes, which were eager to get a better social status so far denied to them, right? So this the same way both Jainism and Buddhism drew large converts from
new subcaste who were interested in getting equal status for all castes, thereby getting the facility of having better social status. If you guys like this video, then please subscribe to the channel and also please comment. Okay, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ गलत लग रही है. ठीक है, और शेयर भी प्लीज़ करिएगा. सो थैंक यू सो मच.